नमस्कार पाइनियर्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के संस्थापक डॉक्टर निकोलस के विशेष साक्षात्कार के बारे में। दोस्तों, इस इंटरव्यू के जरिए आप समझ पाओगे कि पाई नेटवर्क कैसे काम करता है, इसका विजन क्या है और हम सब पाइनियर्स के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हो तो आपके 80% संदेह दूर हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों पाई नेटवर्क यहां तक सिर्फ आपके योगदान से आया है और आगे भी हम सब मिलकर इसे दुनिया तक लेके जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डॉक्टर निकोलस का इंटरव्यू और देखते हैं पाई नेटवर्क का असली विजन और भविष्य। So, what's your background and how did you get into cryptocurrency? तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्रिप्टो करेंसी में कैसे आए? Hi, and thanks for having me. I was actually involved in the space before even the invention of Bitcoin, and that was actually due to my research interests at the university. So I'm a computer scientist. I did my PhD and postdoc at Stanford University, and my interests are in distributed systems, which is essentially what a blockchain is. The precursor to blockchain existed many years before, and social computing, which is related to human-computer interaction and crowdsourcing. नमस्ते और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। असल में मैं इस क्षेत्र में बिटकॉइन के आने से भी पहले शामिल था। यह सब मेरी यूनिवर्सिटी में रिसर्च रुचियों के कारण हुआ। मैं एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हूं। मैंने अपना पीएचडी और पोस्टडॉक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। मेरा फोकस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पर था, जो कि मूल रूप से ब्लॉकचेन ही है। ब्लॉकचेन से पहले भी इसके पूर्वज मौजूद थे। So, as part of my master's thesis, I created a framework for writing smart contracts on fault-tolerant distributed systems. And of course, back then it wasn't called smart contracts and it wasn't called the blockchain, but it was similar concepts. And then, as part of my postdoc, I introduced and taught a class at Stanford University at the computer science department there, the CS359B, which was teaching students how to design decentralized applications on blockchain. मैंने सोशल कंप्यूटिंग के तहत एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी चीजें लिखी जा सकती थीं, फॉल्ट टॉलरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पर। हालांकि उस समय इन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या ब्लॉकचेन नहीं कहा जाता था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत मिलता जुलता था। स्टैनफोर्ड में अपने पोस्टडॉक के दौरान मैंने एक कोर्स भी शुरू किया था, CS359, जिसमें छात्रों को ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डिजाइन करना सिखाया जाता था। And now in this class, students created and deployed multiple functional working prototypes of decentralized applications, but they all got stuck in having people to use them. And that's mostly because many reasons, but user experience related reasons on blockchain back then. But one core blocking point was that before anyone can use any of those apps, they needed to acquire cryptocurrency to pay for the gas fees. छात्रों ने कई वर्किंग प्रोटोटाइप भी बनाए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि लोग उन एप्स का इस्तेमाल करें। यूजर एक्सपीरियंस बहुत जटिल था और सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये था कि किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले लोगों को क्रिप्टो करेंसी खरीदनी पड़ती थी ताकि वे गैस फीस भर सकें। Now, at Stanford is also where I got to meet my other founder of Pi, Chen Yaofan, where she also did her PhD there as well. And it's our academic career and personal interests that is what truly led to create the Pi Network, which we founded at the end of 2008. स्टैनफोर्ड में ही मेरी मुलाकात पाई नेटवर्क की दूसरी संस्थापक डॉक्टर फैन से हुई। उन्होंने भी वहीं से पीएचडी की थी। इसी अकादमिक और व्यक्तिगत रुचि के कारण हमने 2018 के अंत में पाई नेटवर्क की स्थापना की। That's pretty cool. That's pretty cool. And hey, I got a chance to watch a lecture of yours on YouTube. You explaining how blockchain technology works. There's just so much to learn about it. And I really appreciate you taking on that challenge in developing young minds to get involved with the future, especially something that has to do with money governance and law later on down. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझाना बहुत ही बड़ा काम है।
आप युवा दिमागों को इस क्षेत्र से जोड़ रहे हैं, खासकर जब इसका संबंध भविष्य में मनी, गवर्नेंस और लॉ से होगा। यह सराहनीय है। Yeah, thanks for saying this. I really try when I try to explain something, I try to look at what is the audience. So when I am teaching to CS students, the audience is more technical. But when I'm trying to explain something that is for the general population, I'm trying to start from really ground zero. धन्यवाद। जब मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, तो मैं हमेशा श्रोता ऑडियंस को ध्यान में रखता हूं। अगर कंप्यूटर साइंस के छात्रों को पढ़ा रहा हूं, तो टेक्निकल भाषा इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आम जनता को समझाते समय आसान शब्दों में बताता हूं। Keep pushing, man. You're doing a great job. Now, we're going to talk about Pi Network. And what is unique about Pi Network compared to other blockchains coming out and other cryptocurrencies? What makes you guys different? अब हम पाई नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। पाई नेटवर्क बाकी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है? Yeah, so Pi Network is essentially a massive open community with over 35 million engaged members. And this community is powered by Pi, which is the world's most widely distributed cryptocurrency. So this platform that we're putting together is essentially creating a robust, especially accessible ecosystem for three types of people: for users, for developers who are building apps, and for merchants who are using apps. डॉक्टर निकोलस, पाई नेटवर्क मूल रूप से एक बहुत बड़ा ओपन कम्युनिटी है, जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। इस कम्युनिटी को पाई नाम की क्रिप्टो करेंसी पावर देती है, जो दुनिया की सबसे व्यापक रूप से वितरित, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिप्टो है। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो 3 प्रकार के लोगों के लिए है। 1, यूजर्स। 2, डेवलपर्स, जो एप्स बनाएंगे। 3, मर्चेंट्स, जो एप्स का उपयोग करेंगे। And what makes it different? I would say that we followed a number of non-consensus strategies compared to other cryptocurrencies. Like, for example, we didn't just focus on solving a technical problem. Sometimes you hear things like transactions per second and this and that technical solutions. But we also focused on solving the human problems. So having people engaged, having people on the platform to begin with. Another thing that we did differently is that our platform is not just focusing on blockchain native applications and nothing else, meaning like DeFi, NFT. Of course, these are possible on Pi, but this is not the only thing that the platform is focuses. It focuses on all types of applications that solve needs for mainstream audience. Let me see. Another different thing that we did slightly different here is that we focused on accessibility and inclusivity through essentially trying to reduce any kind of barriers for people to participate, such as financial barriers and technical barriers. So financially, we don't ask them to pay for anything to acquire Pi. In fact, it's not even possible for someone to do that. You can only mine it on the platform. And technical barriers, they don't need to be computer scientists or have complicated mining rigs at home that are allowing them to mine. All they need is a mobile phone and participate using. पाई नेटवर्क अलग क्यों है? क्योंकि हमने सिर्फ टेक्निकल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जैसी तकनीकी सीमाओं की बात करते हैं, लेकिन हमने ह्यूमन प्रॉब्लम्स यानी लोगों की भागीदारी और यूजर फ्रेंडली अनुभव को हल करने पर ध्यान दिया। हमने सिर्फ ब्लॉकचेन नेटिव एप्स जैसे डेफी, एनएफटी पर फोकस नहीं किया। पाई नेटवर्क हर तरह के उपयोगी एप्स पर केंद्रित है जो आम जनता के काम आ सके। एक और बड़ी बात, हमने एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी को प्राथमिकता दी। पाई खरीदना संभव ही नहीं है, इसे सिर्फ मोबाइल से माइन किया जा सकता है। न तो महंगे कंप्यूटर चाहिए और न ही माइनिंग रिग्स।
बस एक मोबाइल फोन और भागीदारी। Amazing. Yeah, there's like so many mining farms out there, and it's crazy how much it can damage the ecosystem, in my opinion. And we definitely need more room for improvement in protecting the environment, and that's a great way. And plus, you literally have a computer in palm of your hand, so and more people, the phone is so easy to use, a kid could navigate it. So that's just, you're going to get like 10-year-olds learning how to mine cryptocurrencies and then them making more money than their parents. It's amazing. So what will the KS or KYC solutions help the pioneers? How will it help the pioneers? हाँ, आजकल माइनिंग फार्म से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मोबाइल से माइनिंग करना आसान है। बच्चे तक इसे सीख सकते हैं और शायद भविष्य में अपने माता पिता से ज्यादा कमा सकेंगे। तो अब बताइए, पाई नेटवर्क का केवाईसी सॉल्यूशन पायनियर्स की कैसे मदद करेगा? हाँ, so how will it help? And first of all, Pi is from the beginning, we're building it as a fully compliant platform. We're here. Our identities are known, and we wanted it to, as part of compliance, these services, these networks need to do something called KYC. So KYC is Know Your Customer, stands for Know Your Customer, and it was initially used in traditional businesses. So in this case, in a blockchain, the word customer doesn't make a lot of sense, but I guess we're going with it. So the need for KYC is for compliance purposes, but also for the ability to have a more valuable ecosystem. So if you remember from maybe what is it now, 10, 20 years ago, when social networks started existing, there was a bunch of social networks before Facebook that were all composed of fake users and fake accounts, and every cat and dog had their own profile on the social network. And then Facebook came along, and it was the first one that was saying, no, we want real users. We want real people, real faces, real names. That was unheard of on the internet before that, because everybody was still afraid of putting the real name on the internet. And yet what happened is that it shifted the whole world's mentality, and people started using the internet for a lot more useful purposes. In the same thing now with blockchain. The first generation was, let's use it for anonymity, but that didn't work out very well, and it doesn't produce as useful utility as it would have. And now the second generation is the one that is based on real identity, and actually this is how you can you're able to create true useful applications on top of blockchains. Now Pi created its own KYC solution. I'm happy to tell you about it as well. But डॉक्टर निकोलस, पाई शुरुआत से ही कंप्लायंस पर बना है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को केवाईसी, नो योर कस्टमर, लागू करना होता है। पारंपरिक बिजनेस में केवाईसी का मतलब ग्राहक की पहचान करना होता है। ब्लॉकचेन में कस्टमर शब्द फिट नहीं बैठता, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। काईसी दो कारणों से जरूरी है। 1. कंप्लायंस। 2. वैल्यूएबल इकोसिस्टम बनाना। अगर आप याद करें, सोशल नेटवर्क्स फेसबुक से पहले नकली अकाउंट से भरे हुए थे। फेसबुक पहला प्लेटफॉर्म था जिसने असली लोगों की मांग की, असली नाम और असली पहचान। इससे इंटरनेट पर भरोसा बना और उपयोगी ऐप्स बने। इसी तरह ब्लॉकचेन की पहली पीढ़ी एनोनिमिटी पर केंद्रित थी, लेकिन उससे उपयोगिता नहीं निकली। अब दूसरी पीढ़ी रियल आइडेंटिटी पर आधारित है, और यहीं से असली उपयोगी ऐप्स बन सकते हैं। पाई ने अपना खुद का केवाईसी सॉल्यूशन विकसित किया है। मुझे याद है फेसबुक पर नकली अकाउंट्स को रोकने के लिए कितनी मुश्किलें थीं, लेकिन असली पहचान से प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर बना। मेरा मानना है कि ब्लॉकचेन का भविष्य भी ऐसा ही होगा। Yeah, I remember when Facebook was out, and the way that they would weed out the fake users is you had to message like 10 people to make sure that you're actually real. And it was just like such a process, and it was kind of annoying. I was just
I didn't like it, but when Facebook came out, it was just so much easier and actually better. So I think blockchain will be better in the future. And as more people get involved with it and start understanding the technology, you'll see a lot more use cases in it. And what was I going to say? Yeah, that's pretty much it. And so, why was accessibility an important factor for developing Pi Network? तो बताइए, पाई नेटवर्क बनाते समय एक्सेसिबिलिटी इतना महत्वपूर्ण क्यों था? Well, accessibility is very important. Any successful currency that wants to support a real ecosystem with utilities relies on a large social network, because in order for you to have true utility, you need to have many people recognize the cryptocurrency and are able to own it, and they are willing to transact goods and services with that currency. So the size of a crypto network essentially needs to hit an inflection point for real utilities and markets to form. And that's that after this inflection point, we will be able to have network effects. क्योंकि असली इकोसिस्टम और यूटिलिटी तभी बनेगी जब एक बड़ा सोशल नेटवर्क हो। जितने ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को पहचानेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही उसकी वास्तविक कीमत बनेगी। क्रिप्टो नेटवर्क को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक पहुंचना होता है, जहां पर पर्याप्त लोग इसे गुड्स और सर्विसेज के लिए स्वीकार करें। उसके बाद नेटवर्क इफेक्ट शुरू होते हैं और असली मार्केट बनता है। Okay. Yeah, I just remembered what I was going to say earlier. Blockchain technology, back to that. Blockchain technology is like the internet in the 90s. Yeah. So that's what I just wanted to say. And you also made a great point with the accessibility. And what does this mean for the future of mining on mobile phones? बिल्कुल सही कहा। और हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं इंटरनेट ऑफ द फ्यूचर कहूंगा। 90 थैंक यू। बस यही कहना चाहता था। और आपने एक्सेसिबिलिटी पर बहुत अच्छा पॉइंट बनाया। तो इसका भविष्य पर क्या असर होगा, खासकर मोबाइल फोन पर माइनिंग के लिए? So I think that in order for you to have a useful cryptocurrency, you can't think 2009. So Bitcoin was great because it proved to the world that cryptocurrencies exist, and it is possible to have a decentralized ledger that is maintaining an accurate, essentially accurately maintains the balances of different people. Because before that, you would need a centralized bank to tell you what your true balance is. And with Bitcoin, the proof of concept of a decentralized bank essentially is possible. But that was 2009, and people were using computers, and it was a little slow, and it's consuming a lot of energy, as we all say, and its block takes 10 minutes. But today, if you want to have a cryptocurrency that is functional and useful to everyday people, it needs to be on mobile, and it needs to be more faster and more accessible. So to answer your question, I think that it is the future. Mobile, it has to be mobile. देखिए, अगर आपको एक उपयोगी क्रिप्टो करेंसी बनानी है, तो आपको 2009 के बिटकॉइन जैसे नहीं सोचना चाहिए। बिटकॉइन बहुत शानदार था, क्योंकि उसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी संभव है। एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर बनाया जा सकता है, जो लोगों के बैलेंसेस को बिना किसी बैंक के सही रख सके। पहले इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड बैंक की जरूरत होती थी, लेकिन वो 2009 था। तब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे। ये धीमा था और बहुत ज्यादा बिजली खा रहा था। बिटकॉइन का हर ब्लॉक 10 मिनट में बनता है। आज अगर हमें ऐसी क्रिप्टो करेंसी चाहिए जो रोजमर्रा के लोगों के काम आए, तो वो मोबाइल पर होनी चाहिए, तेज और आसानी से इस्तेमाल करने लायक। तो आपके सवाल का सीधा जवाब है हाँ, भविष्य मोबाइल है। यह मोबाइल पर ही होना चाहिए। Just like the metaverse. Everybody, pretty soon,
do you teach class from home? क्या आप अब भी स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं? My primary job is building Pi Network, but it just happens that every year since I left Stanford, I have been invited to co-instruct one of the blockchain classes over at Stanford. It's not official, but it just every year it just happens that they invite me again. So I teach the technical lectures in that class, and other instructors teach non-technical aspects. मेरा मुख्य काम पाई नेटवर्क बनाना है, लेकिन जब से मैंने स्टैनफोर्ड छोड़ा है, लगभग हर साल मुझे वहां की ब्लॉकचेन क्लासेस में को इंस्ट्रक्टर के तौर पर बुलाया जाता है। ये ऑफिशियल जॉब नहीं है, लेकिन वे मुझे इनवाइट करते रहते हैं। मैं वहां टेक्निकल लेक्चर्स देता हूं और बाकी इंस्ट्रक्टर्स नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पढ़ाते हैं। Okay. I like it. Now, what are the stages of verification? I know sometimes it could be a little bit complex with the authenticator, and it can be kind of tedious to some people. So, ठीक है, अब एक सवाल है, वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन के स्टेजेस क्या हैं? कभी लोग ऑथेंटिकेटर वगैरह को थोड़ा कॉम्प्लेक्स मानते हैं। The stages of authentication. Can you maybe help me understand your question a little more? like क्या आप थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं? क्या आप पूछ रहे हैं कि लोग अपने कॉइन्स कैसे एक्सेस करते हैं और कैसे सुनिश्चित हो कि कोई हैकर उनका अकाउंट न चुरा ले? how to access the cryptocurrencies or the coins? So the Pi, are you talking about Pi? To like how do I say, to make sure the person that's actually accessing it is actually them, not some hacker from across the other side of the world. हाँ, मतलब ये कैसे कंफर्म होता है कि जो अकाउंट चला रहा है वो असली व्यक्ति ही है, कोई दूर बैठे हैकर नहीं? Yeah, there are two questions here. I guess one is about the user and one is about the consensus algorithm. I think you're more interested about the user. So Pi has two levels. Mhm. So first of all, for the past few years, people have been mining it through a mobile app. So on that mobile app, they have been accumulating Pi as, let's say, tokens, and these are not these are the tokens that are going to be migrated into the mainnet blockchain, and has been migrating. We have actually already migrated over 2.5 something million people into the mainnet blockchain. So for these two systems, there is essentially two different ways of authenticating yourself. So for the mobile app system, we use a traditional username, password, or you can have Facebook sign in and a few other Apple sign in and a few other ways to authenticate yourself. Now for the actual blockchain, which is what happens after you KYC and your balance is migrated from the app into the blockchain. For the actual blockchain, we use non-custodial wallets. That's a mouthful, but for the audience who may not know what this means, it means that the users will have to remember a passphrase, and that passphrase is enough to fully authenticate themselves, and no one else knows that passphrase, and to the point that if someone were to hack it, theoretically, without stealing it from you using a virus, if they were to actually hack it and hack SATO 56, it would take them 100 billion years to do it using computational methods. Of course, they can try to deceive you, to give them your passphrase, which is a different problem. It's a user experience problem, but in terms of cryptography, it's very strong. So essentially, the proper way all cryptocurrencies are supposed to do it is through non-custodial wallets. So the users have to remember this passphrase. Now, because this passphrase is a little difficult to remember, we ask the users to save it on somewhere safe, and we help them use the phone's
biometric features such as the thumbprint or the facial scan to essentially load up this passphrase using their phones algorithms. And there are some phones, some depending on companies, I guess you can tell that these days most phones are doing a pretty good job at securing those data. ठीक है, इसमें दो लेवल है। पिछले कुछ सालों से लोग पाई मोबाइल ऐप से माइनिंग कर रहे थे। उस ऐप में उनके पाई टोकन्स के रूप में जमा हुए, जिन्हें धीरे धीरे मेननेट ब्लॉकचेन में माइग्रेट किया जा रहा है। अभी तक 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग माइग्रेट कर चुके हैं। ऑथेंटिकेशन के दो तरीके हैं। एक, मोबाइल ऐप में यूजर नेम, पासवर्ड, फेसबुक लॉगिन, एप्पल साइन इन आदि। दो, ब्लॉकचेन, केवाईसी के बाद यहां नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि यूजर खुद एक पास फ्रेज याद रखेगा। सिर्फ वही पास फ्राज उसकी पहचान है, कोई और इसे नहीं जानता। क्रिप्टोग्राफी इतनी मजबूत है कि इसे हैक करने में 100 अरब साल लगेंगे। समस्या सिर्फ ये है कि लोग कभी कभी अपनी पास फ्रेज भूल जाते हैं या धोखे से किसी को बता देते हैं। इसलिए हमने फोन बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल किया है, जिससे पास फ्रेज सुरक्षित रहे और आसानी से एक्सेस हो सके। The simplicity of it is very important, and I hope this encourages people to jump into it and not be afraid of memorizing a phrase. Just get into it. It's not that hard, and the more you learn about it, the easier it'll become. यह तो अच्छा है, इससे लोग बिना डरे इकोसिस्टम में शामिल हो सकेंगे। So the good thing about the Pi, if you want me to add this, is that the whole ecosystem is built around the program we call the Pi browser. So it's like a web browser, but for Pi applications, and you can access the ecosystem there. And one of the applications of this Pi browser is the Pi wallet. So essentially, we have created a system where the various Pi apps can talk to each other and the Pi wallet, and they are able to interconnect. So let's say you are on a gaming app and you want to spend a few tokens to continue where you left off. So you say, I want to do it. You push a button, then it pulls the Pi wallet in front of you. Then you touch your thumb. It asks you if you are sure that you want to submit this amount of Pi to that specific app. You say yes or no, and then Pi is transmitted to the app, and you are directed back to where you were. And this whole thing connects together, making it as seamless as possible for the end user. So even though these concepts, cryptocurrencies and blockchain and all these things are sometimes could be very complicated for non-technical audience, we're trying to make it as simple as possible. हाँ, सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है। हमने इसके लिए पाई ब्राउजर बनाया है। यह एक वेब ब्राउजर जैसा है, लेकिन सिर्फ पाई एप्स के लिए। पाई वॉलेट भी इसी ब्राउजर के अंदर चलता है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी गेमिंग ऐप पर खेल रहे हैं और आपको गेम जारी रखने के लिए कुछ पाई खर्च करने हैं। आपने बटन दबाया, पाई वॉलेट खुला, थंबप्रिंट लगाया, ट्रांजैक्शन अप्रूव किया और वापस गेम पर आ गए। ये पूरी प्रक्रिया सीमलेस है, ताकि आम लोग आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकें। Now, would that be the trust graph working with the ecosystem? और ट्रस्ट ग्राफ क्या है? Now, the trust graph is something core to our consensus algorithm. So it's the way that Pi works is it essentially creates a trust graph of people who are considered to be on the mainnet in a way. And if you there is a mathematical proof in the paper that is explaining this, which is about 20 pages long. But if you're trying to think of it very, very intuitively, if the Pi network was it wasn't the 35 million people plus we have, but it was just me, you, and a couple of your friends. And the way it works at Pi is that
we get to select 3 to 5 people we know and trust, literally from our contact list. And this is for us our security circle. And the combination of all the security circles creates the trust graph. So if in the network it was me pointing at you and 2 other people, and you were pointing at me and some of them, and they were pointing at you, and we were pointing at each other. Essentially, if someone were to come and create 1,000 fake accounts, then those fake accounts wouldn't be able to affect the decisions that we make or where we allocate our trust. Because in order for them to modify anything in our decisions, they would need to convince us to stop pointing at each other and start pointing at them. ट्रस्ट ग्राफ पाई नेटवर्क का कोर कंसेंसस एल्गोरिदम है। आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए नेटवर्क में सिर्फ मैं, आप और कुछ दोस्त हैं। हम 3 से 5 लोगों को चुनते हैं जिन्हें हम सच में जानते और ट्रस्ट करते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी सर्कल कहलाते हैं। सभी सिक्योरिटी सर्कल्स मिलकर एक ट्रस्ट ग्राफ बनाते हैं। अब अगर कोई 1000 फेक अकाउंट्स बना भी ले तो उनका हम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि असली ट्रस्ट तो हमारे बीच है। हम एक दूसरे को चुन रहे हैं, न कि फेक अकाउंट्स को। Okay. Now, you have a robust active member users, and it's 35 million plus, and that's pretty impressive, I would say. How did you get that many people involved into the Pi network in itself? Just I can't wrap my mind around it. It's amazing. बहुत बढ़िया। अब आपके पास 35 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं। आपने इतने लोगों को पाई नेटवर्क से कैसे जोड़ा? Yeah, so it's about being clear on the value propositions and trying to create a true utility, trying to provide a safe and fair ecosystem for everyone. So essentially, it's about being simple to use, simple to develop, accessible, basically no financial or technical barriers to begin, and creating network effects. यह सब क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन और यूटिलिटी पर निर्भर है। हमने एक सुरक्षित और निष्पक्ष इकोसिस्टम बनाया जो सिंपल और एक्सेसिबल है। इसमें कोई फाइनेंशियल या टेक्निकल बैरियर नहीं है। इसी कारण नेटवर्क इफेक्ट्स बने और लाखों लोग जुड़ते गए। All right. Now, what is your target audience for Pi Network? और पाई नेटवर्क का टारगेट ऑडियंस कौन है? Right, that's a very good question. So I think that in order for us to create anything that is that achieves mass adoption, and I think that's what the blockchain industry needs as a whole, and we are all would like to collaborate on this. In order for the blockchain industry to achieve mass adoption, we shouldn't be only focusing on one small audience, like one specific segment. We should focus on everyday people. It's good and it's easy to get excited, a small group of tech enthusiasts or crypto people, and of course it's necessary to begin from somewhere. We can begin from there, but we need to create interfaces that are accessible by everyone. So I would say, everyone, even our parents and our kids. And बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि अगर हमें मास एडॉप्शन तक पहुंचना है और यही पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की जरूरत है, तो हमें सिर्फ किसी एक छोटे ऑडियंस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें एवरीडे पीपल यानी आम लोगों के लिए एक्सेसिबल इंटरफेस बनाने होंगे। शुरुआत टेक एंथुसियास्ट या क्रिप्टो यूजर्स से करना जरूरी है, लेकिन असली लक्ष्य है कि हमारे माता, पिता और बच्चे तक इसे आसानी से समझ और इस्तेमाल कर सके। Believe me, I've been trying, and my mom and dad they think I'm crazy. They really do. They're just like, go get a job, start working, which I do, but I'm just like, but this is the future, mom and dad, you should get into it, especially while it's cheap. And it's just,
they can't wrap their mind around it. They're just सच कहूं तो मैंने अपने मॉम डैड को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सोचते हैं मैं पागल हूं। वे कहते हैं जॉब कर, काम पर ध्यान दे, और मैं करता भी हूं, लेकिन मैं कहता हूं यह भविष्य है, आपको इसमें आना चाहिए, खासकर जब ये अभी सस्ता है। वे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। Maybe we should send them a Pi invitation code and do the experiment to tell us if they will manage to do it. तो आप उन्हें एक पाई इनविटेशन कोड भेज दीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए क्या वे इसे मैनेज कर पाते हैं। Oh, I definitely will. Send it over, and that challenge is on. All right. So, does the bear market clean out the landscape, I mean? जरूर, चैलेंज ऑन। तो क्या बेयर मार्केट क्रिप्टो स्पेस को साफ करता है? That's right. Yes. So in the crypto space, there is a lot of noises, and also there is a lot of projects maybe that are in for the wrong reasons, maybe trying to have some quick effects without paying attention to long-term value. So it's usually the case that long-term valuable projects are usually started or basically persevered during low times. Because anything that gets very quick results can also very quickly decay. So we saw some of that in the previous months or the beginning of this period. हाँ, बिल्कुल। क्रिप्टो स्पेस में बहुत नॉइज है और कई प्रोजेक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आते हैं, लेकिन असली वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स वही होते हैं जो लंबे समय तक सरवाइव करते हैं और मुश्किल वक्त में भी टिके रहते हैं। क्विक सक्सेस अक्सर जल्दी खत्म भी हो जाता है, इसलिए बेयर मार्केट असली बिल्डर्स और लॉन्ग टर्म बिलीवर्स को अलग कर देता है। I agree. And it just shows who the real enthusiasts are. Also, I personally like the bear market. It's just something I like talking more about it when times are bad. Just because I know when times are good, people are just going to be like, "Hey, you know what, Sonny, or crypto kid, you were right," or "Doctor, you were right," at school, or something like, or your peers, or somebody that you were trying to convince, or persuade. सही है, मुझे भी बेयर मार्केट पसंद है, क्योंकि जब हालात बुरे होते हैं तब असली एंथुसियास्ट सामने आते हैं और गहरे डिस्कशंस होते हैं। There's something I like too. It's about going to conferences. So when the crypto space is very hot, then you go to conferences and there's so many people there, and the types of conversations sometimes you're having are very shallow. But when times are a little more smaller, then you tend to meet and discuss and have a lot more challenging conversations. जब मार्केट गर्म होता है, कॉन्फ्रेंसेस में भी शैलो टॉक्स होती हैं, लेकिन बेयर मार्केट में चैलेंजिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं और आपको उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। Exactly, and you have to have the answers for them, and sometimes you don't, because you're continuously learning about and going into rabbit holes with blockchain technology, and there's just so many use cases, like for identity, healthcare, and so much more. The supply chain too. So when is the mainnet dropping for Pi Network? ब्लॉकचेन में इतने यूज केसेस हैं, आइडेंटिटी, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन की रैबिट होल कभी खत्म नहीं होता। तो बताइए, पाई नेटवर्क का मेन नेट कब लॉन्च होगा? Well, technically we are already on Mainnet. So we launched it officially back in December of 2021. But Pi has done one other thing that is non-consensus. You asked me about this question earlier, and there's so many non-consensus things, is we created the concept of enclosed mainnet and open mainnet. So we're currently on the enclosed mainnet, which means that the real blockchain is out there.
We are in the process of performing KYC on the members and migrating their balances essentially over to the enclosed mainnet. During the enclosed mainnet period, it is not allowed to connect the Pi blockchain with any other blockchain or external systems. And during this period, it gives us time to do a few things, such as migrating all the members, as I said, over to the mainnet, continue building utility for the platform. It allows us to have more developers test their applications and being able to do all that without any external noises or distractions, essentially. And it's an example, like, for example, the KYC solution we created was one of the Pi applications that we built on top of our own platform. And in order for someone to KYC themselves, they need to pay 1 Pi. And that 1 Pi is then distributed to everyone who is helping with their KYC. So there is both AI algorithms, as with every KYC solution, but when the AI algorithms need help from humans, then these humans are coming from the same network, so it's self-bootstrapping itself, and that's happening even during the enclosed period. Yeah, so we are technically, the answer is that we are technically on mainnet already. It's called enclosed mainnet, and at some point we are going to move to the open network. तकनीकी तौर पर हम पहले से ही मेननेट पर हैं। हमने इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन पाई ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, एनक्लोज्ड मेननेट और ओपन मेननेट। अभी हम एनक्लोज्ड मेननेट पर हैं। इसका मतलब ब्लॉकचेन लाइव है, केवाईसी चल रहा है, बैलेंसेस माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल ब्लॉकचेन्स या सिस्टम से कनेक्ट करने की अनुमति नहीं है। इस एनक्लोज्ड पीरियड में हमें 3 फायदे हैं। 1, सारे मेंबर्स को माइग्रेट करना। 2, प्लेटफॉर्म पर यूटिलिटीज और एप्स बनाना। 3, डेवलपर्स को अपने एप्स टेस्ट करने का मौका देना बिना एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के। पाई का केवाईसी सॉल्यूशन। यह एक पाई एप्लीकेशन है जहां केवाईसी कराने के लिए 1 पाई देना पड़ता है। यह 1 पाई उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो केवाईसी प्रोसेस में मदद कर रहे हैं। इस तरह यह सेल्फ बूटस्ट्रैपिंग सिस्टम है। तो जवाब यह है, हम मेननेट पर हैं, एनक्लोज्ड, और आगे जाकर ओपन मेननेट पर मूव करेंगे। Thank you for clarifying that. You answered a lot of questions that I asked for people that have been watching YouTube videos like me and bringing out their curiosity. So definitely appreciate that. Any last words before we close? Like what's next for Pi Network? बहुत अच्छा, आपने कई लोगों की YouTube वाली क्वेरीज क्लियर कर दी। अब आखिरी सवाल, पाई नेटवर्क का नेक्स्ट क्या है? So as I mentioned earlier, we recently announced this KYC solution, which has completed more than 3 million members right now have done their KYC, and that essentially is I think the largest blockchain migration in cryptocurrency history out there. So going forward, we want to continue this KYC and migration. We got a lot more members to accommodate and migrate to mainnet. So that's one thing. We need to continue building the ecosystem during the enclosed period. And that's basically by building more infrastructure needed and enabling utilities to be built by the community itself. So we are this weekend, actually, we are joining 3 hackathons at schools at Berkeley, Harvard, and Cornell. We are sponsoring tracks over there, so we may have some students building some Pi applications during those hackathons and initiatives like this for utility building. And finally, we are also building some utilities ourselves, including on the
user side, meaning that end user applications people can use, but also on the infrastructure side, such as we have a brainstorm application where people can go and brainstorm and create Pi apps. In fact, in the past, there were more than 10,000 ideas that were proposed in this platform, and we are improving it. And other things like this, such as we have a translation app which is currently used by some translation task force that we have for many languages, that people from the platform are translating themselves our interfaces. So in the future, this internal app that we have, we're going to make it public so that the other application developers can also use it to translate their own applications. That's it for us. Building. अभी हमने KYC सॉल्यूशन लॉन्च किया है। 3 मिलियन से ज्यादा लोग KYC कर चुके हैं। यह क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन माइग्रेशन है। हमारा इमीडिएट लक्ष्य है और लोगों का KYC कराना और उन्हें मेननेट पर माइग्रेट करना, इकोसिस्टम बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज पर ध्यान देना। इस वीकेंड हम बर्कली, हार्वर्ड और कॉर्नेल में 3 हैकाथॉन स्पॉन्सर कर रहे हैं। वहां छात्र पाई एप्लीकेशंस बनाएंगे। ऐसे इनिशिएटिव से यूटिलिटी बढ़ेगी। हम खुद भी कुछ यूटिलिटीज बना रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्म ऐप, जहां लोग पाई एप्स के आइडियाज सबमिट कर सकते हैं। पहले ही 10,000 प्लस आइडियाज आए हैं। ट्रांसलेशन ऐप, आज हमारे वॉलंटियर्स कई भाषाओं में इंटरफेस ट्रांसलेट कर रहे हैं। भविष्य में इसे पब्लिक करेंगे ताकि थर्ड पार्टी डेवलपर्स भी अपनी एप्स ट्रांसलेट कर सकें। तो यही है इकोसिस्टम बनाना, डेवलपर्स और यूजर्स को टूल्स देना और ग्लोबल अडॉप्शन की दिशा में बढ़ना। I'm honored to have you on this show, and it's been a pleasure of mine. I hope you had as much fun as I did on this. And yeah, man, I wish you the best of luck with your endeavors, Doctor. And thanks for having me. anytime. It was indeed fun. All right. So have a good night, sir. You too. Thanks. Bye-bye. Bye. बहुत शानदार डॉक्टर, आपको शो पर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करता हूं आपने भी मजा लिया। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, मुझे भी मजा आया। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इंटरव्यू था डॉक्टर निकोलस की तरफ से। शायद आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।